और लाइव चैट बताना पड़ेगा उसे कि लाइव उसको। चला गया। माँ आवाज कम करिए। हेलो शीतल, गुड मॉर्निंग। लाइव चैट चलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। How was the holiday? Fine, but it's not too bad, too cold. You should work hard. Now today we are going to learn a lesson, a letter to the God. By this you mean a letter means a letter which you write a message to somebody, and this letter is written to the God. We'll see this. What is in this chapter? Before you read, they say faith can move a mountain. Faith can move a mountain. What do you mean by this? Mountain means hill, but this doesn't mean that you shake a mountain. But this is a phrase. It is known as that if you have faith in anything, you can do that hard work also. If you have any faith in anybody, you can do as much as work you want. That means your faith can move a mountain. But what should we put over faith in? हमको विश्वास किस पे रखना चाहिए? आपका अगर कोई विश्वास है कि जैसे आपका कोई लक्ष्य है कि आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तो आप उस एग्जाम को अवश्य क्रैक कर सकते हैं। तो this question should dedicate the post. There is a farmer known as Lincho. Lincho is a farmer. He writes a letter to the God. When does he write a letter to God? वो चिट्ठी कब लिखता है? जब उसके क्रॉप्स, जब उसके फसल खराब हो जाते हैं, जब उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं। And how much money he asks for it? He asks for 100 peso. What is peso? Peso is a currency in Mexico. So this peso is like you have Indian rupees. Same way the peso is a currency in Mexico. In this letter, we will see that whether this letter reaches to the God or not. So and he asks for money. How the money will come? That is also a very big question. Now let's see what happens. In this day's one activity, you have heard whenever you want to send something message to your friends, you write a letter, and there is a telegram also. And there is one more when you want to send money to somebody. Nowadays it has become very advanced. In this advanced system, you send money by internet, online banking, by Paytm, then payphone. These are all these facilities available. ये सब सुविधा आपको भी मिलती है, जिससे आप पेटीएम से पैसा भेज सकते हैं, ऑनलाइन पैसा भेज सकते हैं, इंटरनेट से पैसा भेज सकते हैं, एनटीएफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन पहले जब ये सुविधा नहीं थी तो आपके पास एक सुविधा थी, वो थी मनी ऑर्डर की। मनी ऑर्डर, व्हाट इज मनी ऑर्डर? मनी ऑर्डर मीन्स इफ यू वांट टू सेंड सम मनी टू योर रिलेटिव, आप अपने दोस्त मित्र किसी को भी आप पैसा भेजना चाहते हैं तो पहले मनी ऑर्डर के थ्रू भेजा जाता था। मनी ऑर्डर जैसे आपको मान लो किसी को 500 रुपया भेजना है या 1000 रुपया भेजना है, तो आप कैसे भेजेंगे उसको? वो बाय पोस्ट ऑफिस। आपने पोस्ट ऑफिस गए होंगे, पोस्ट ऑफिस देखे होंगे, पोस्ट ऑफिस में क्या क्या सुविधा होती है, और यही एक सबसे पुरानी और सबसे आज़ादी के बाद जो सुविधा थी, अपने पास पोस्ट ऑफिस थी, जिससे हम लोग चिट्ठी भेजते थे या बाकी सारी चीजें भेजते थे। मनी ऑर्डर में आपके पास एक मनी ऑर्डर फॉर्म होता है। जब आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, उससे आप मनी ऑर्डर फॉर्म 2 रुपया दे करके एक आपको मनी ऑर्डर फॉर्म मिलेगा। मनी ऑर्डर फॉर्म में you have to fill such columns. There are many columns in this. Payee, to whom you want to pay, जिसको आपको देना है, तो उसका नाम लिखेंगे। Pay rupees, you write 500 rupees you want to send. Then the address of where you want to send in rupees. This is really in words. इधर आप वर्ड्स में लिखोगे 500, and here you will write 500 like this, and you will write a name and address here and a pin code here. After that, this is one column, and then the next column comes. You will put your sender signature. You are sending, you will send your signature here. Then there is this is written by the postmaster. He writes money order number, date, rupees in words, and in this, and there is a sign here and put the stamp here. Then this
money order is sent to the place where you want to whom you have sent, like you have sent in different states or different district, wherever you said, then this goes there, and then the pay, who is the payee, he will give the money to him, then he will take one signature or witness of the next neighbor, and this acknowledgement, he will write some message to you. This is an acknowledgement letter, the sender address and everything, and you will, this will be sent back to you, that you will come to know that money has been received by the person whom you have sent. This is a money order form. Then this is space of communication, where you will write a message what you want to send. Okay, I hope you understand this money order form, how the money is seen. So this lesson is on this only, the letter to God, and how he received the money from the God. Now we will go on this lesson further. I hope you must have read this chapter very carefully. See, here are some of the fill blanks on which I have told of the money order. What do you complete the following sentence? In this addition to sender, the form has been signed by whom? In addition to the sender, the form has to be signed by whom? तो फॉर्म जो होता है वो किससे साइन होता है? सेंडर भेजता है, वो कोड पे साइन करता है, अगला पेई करता है. Who sent is payee. Then second is acknowledgement section or form is sent by the post office to the dash after the dash signature. Here it will come sender and then it will come payee. Sender signature, payee signature. And here it will come next the space of communication section used for. In the communication section in the bottom you see what is used to write the information or message for the payee. In the last, the form has 6 sections. The sender needs to fill dash out of this. The sender has to fill the 4 section, and here and receiver has 2 sections. Sender will write down a 4 section and receiver will write down a 2 section. I hope you understand this. Now let's go on the lesson. I will read out this paragraph and then I will just explain you what it is about. Okay. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill. Crest of the low hill. From this height, one could see the river and the field of the ripe corn, dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing the God need was a downpour, at least a shower. Through the morning, Lincoln, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. In this paragraph, the writer is telling that the house where the Lincoln lived was on the crest of the mountain. Crest of mountain means a peak of the mountain from where you can see everything in the bottom where is his land. उसका खेत जो था वो नीचे था और वो ऊपर रहता, ऊपर से सब कुछ देख पाता था कि कैसा उसका फील्ड है, कैसा ब्लूम कर रहा है, फ्लावर टिंगलिंग लाइक दिस. Now we really going to get some water. Woman, the woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field, while smaller ones were playing near the house until the woman called to them and come for dinner. It was during the meal that just. In this paragraph, the writer says that the woman, his mother, Lincoln's mother, was cooking food, and the small boys were playing outside. एंड ओल्डर वेर वर्किंग, और जो बड़े लोग थे वो काम कर रहे थे खेत में, और छोटे बच्चे जो है वो खेल रहे थे. और उनको बुलाती है कि आइए और खाना खा लें, रात का डिनर खाने के लिए लोग बोल रहे थे. As Lincho had predicted to be big drop of rain began to fall in the northern east. Huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet.
The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he explained, "These aren't raindrops falling for the sky; they are new coins. The big drop are 10 cents, and the little one is 5 cents." In this paragraph, the writer says that Leechard was sitting there and he saw a black cloud from the north east side. और उसने देखा कि काले बादल नॉर्थ ईस्ट से आ रहे थे और उसे लगा कि अब मेरे खेत में बरसात होने वाली है, पानी पड़ेगा और मेरा खेत लहराने लगेगा। लेकिन और मोटे मोटे ड्रॉप गिरने लगे। तो इसने कहा कि यार मोटे ड्रॉप जो कॉइन्स है, बिग ड्रॉप 10 सेंट्स वो 10 सेंट के बराबर है और छोटे वाले जो है 5 सेंट के बराबर है। With a satisfaction regarding the field of a ripe corn with its flower dried in the certain of the rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. This truly did not resemble new silver coin. The boy exposed themselves to the rain out to collect the frozen pearls. उसके बाद क्या होता है, जब वो देखता है कि वहां से बूंद गिरने लगता है, एकाएक क्या होता है, एक बहुत तेज तूफान और आंधी आने लगती है और जोरदार उस तूफान के लहरों में के साथ वो जो पल्स जो बरसात को बोल रहा कॉइन है, वो कॉइन नहीं था बल्कि मोटे मोटे पत्थर थे जो उस पर गिर रहे थे। शीतल, I hope you understand. You can listen me properly. Reply yes or no. Yes, शीतल, can you see me? Very good. It's really getting bad to explain the man. I hope it passed quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hell rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with the salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plant. Lynch's soul was filled with sadness. And when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. In this paragraph, he said his feeling. When the storm came, जब वो जोरदार हवा बहती है और उसका मोटे मोटे पत्थर ओला पड़ने लगते हैं, उससे क्या होता है, पूरा फसल उसका बर्बाद हो जाता है। वो सोचता है कि थोड़ा देर होगा उसका खत्म हो जाएगा, लेकिन वही घंटा तक ये तूफानी हवा और ओले पड़े जिससे उसके फसल जो है एकदम खराब हो गए और वो बहुत दुखी हो जाता है। He feel very sad और वो अपने लड़के को बोलता है, have read more than this. The hall has left nothing. This year we will have no corn. The night was sorrowful one. All over the world was nothing. There is no one who can help us. Well, we all go hunger this year. तो इस तूफान से क्या होता है, उसका फसल पूरे नुकसान हो जाते हैं और अपने लड़का को बोलता है कि इस साल हमको भूखो रहना पड़ेगा, हमको खाने के लिए कुछ नहीं हो पाएगा और वो बहुत दुखी हो जाता है। इस दुखी में नॉर्सी इन दिस पैराग्राफ वी हैव, आई होप यू अंडरस्टैंड, इन दिस he says that इसको हम लोग रिकैप करते हैं। इसमें जो होता है, एक किसान, he is a farmer, he is waiting there that बरसात आए, उसके फसल आबाद होंगे, लेकिन एक तूफान आने से उसकी फसल पूरी खराब हो जाती है, नुकसान हो जाती है और वो बहुत दुखी हो जाता है। What did Lincoln hope for? Lincoln hope for a good rain. What did Lincoln say to raindrop? इस क्वेश्चन का तुम आंसर लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, राइट शीतल? Now we go for next paragraph. But the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was single hope, help from God. और उसको कोई उम्मीद नहीं रहती है कि कोई भगवान कोई उम्मीद कर पाएगा कि बरसात से पूरा फसल खत्म हो चुका होता है। Do not be upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. वो सोचता है कि अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी भूखों नहीं मरेगा। That's what they say. No one dies for hunger. All through the night, Lincoln thought only of
has one hope, the help of God. वो रात भर यही सोचता रहता है कि मुझे भगवान से कोई मदद मिलेगी. Whose eyes, as she was been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. Lincoln was an ox of man working like an animal. लिंचन जो था किसान था, वो एकदम बैल की तरह काम करता था, खटता था बहुत ज्यादा, बहुत मेहनत करता था. The film, but still he knew how to write. The following Sunday at the daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to the town and place in the mail in the nothing less than a letter to God. तो रात भर सोचता है कि मैं सुबह जब उठूंगा तो भगवान को एक चिट्ठी लिखूंगा अपने अपने दुख तकलीफ के बारे में. God, he wrote, if you do not help me, my family and I will go hunger this year. I need 100 peso. How much he need? He need 100 peso in order to show my field show my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो बोलता है कि मैं भगवान को एक चिट्ठी लिखूंगा जिसमें मैं 100 पेसो उनसे मांगूंगा ताकि मैं अगला खेती के लिए अपना फील्ड को तैयार करके उसमें बो सकूं ताकि हमारे परिवार जो वो भूखों न रहे. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled what to town. At the post office he placed the stamp on the letter and dropped in the mailbox. वो क्या करता है, एक चिट्ठी लिखता है, लिफाफा लेता है, लिफाफे में वो चिट्ठी को डाल के ऊपर लिखता है टू गॉड और इस वो चिट्ठी को मेल बॉक्स में डाल देता है. One employee who was postman and was help at the post office went to his boss and laughed heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he knew that address the postman of a fat ML. और ये जो पोस्ट ऑफिस जो एक आदमी काम करता है वो क्या करता है, वो लेटर लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास के और उसको बोलता है देखिए लेटर आया टू द गॉड, गॉड के लिए चिट्ठी है. अब एड्रेस किसी को मालूम रहता है कि चिट्ठी कहाँ जाएगा. और लेटर ले जाके पोस्ट मास्टर को दिखाता है, बोलता है कि ये एनवलप उस पर लिखा है टू गॉड. अब ये चिट्ठी कहाँ भेजना उनको नहीं समझ आता, तो चिट्ठी खोलते हैं. ऑल गो आउट एंड लाफ, सभी लोग उसके मूर्खता पर हंसते हैं. और वो इमीडिएटली टर्न सीरियसली और एकाएक वो अचानक सीरियस होकर के उस चिट्ठी को खोलता है एंड टाइप द लेटर इन द डेस्क कमेंट, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग द कॉरस्पॉन्डिंग विद गॉड. वो बोलता है कि उस लड़के का विश्वास कितना है कि वो भगवान पर कि उसको भगवान उसको मदद करेगा और इसने उसे चिट्ठी लिखा. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द रिटर्न राइटर फेथ इन गॉड द पोस्टमैन केम अप विद एन आइडिया. तो जो पोस्ट मास्टर रहता है वो बोलता है कि इस लड़के का विश्वास भगवान पर न टूटे, तो ये वो आइडिया लेके आता है. क्या आइडिया लेके आता है, कौन सी, आंसर द लेटर बट व्हेन ही ओपन इट इट वाज एविडेंट दैट टू द आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन द गुड wall like ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from. जब वो चिट्ठी खोलता है वो सोचता है कि उसको जवाब देना पड़ेगा पेपर में लिख के दोबारा. लेकिन वो जब देखता है ऐसा उसको पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि उसको क्या चाहिए था, उसको पैसा चाहिए था. तो he himself gave part of salary, अपने तनख्वाह में से कुछ पैसा लेते हैं और अपने वर्कर जो होते हैं पोस्ट ऑफिस जो लोग काम करते हैं उनसे भी पैसा कलेक्ट करते हैं और उस पैसे को कलेक्ट करने के बाद उस पैसे को ये लोग लिंकन के एड्रेस पर भेज देते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे एक फार्मर जो होता है उसका खेत खराब होता है, वो भगवान के विश्वास में वो रहता है और भगवान को वो चिट्ठी लिखता है कि उसको मदद चाहिए. और सेकंड उसमें हम लोग ने देखा कि किस तरह लेटर पोस्ट ऑफिस में जाता है, पोस्ट मास्टर खोल के पढ़ता है और कैसे वो मदद करना चाहता है. फॉलोइंग संडे in next paragraph we'll go. The following Sunday Lincoln came a bit earlier than usual to ask if there was any letter for him. It was the postmaster himself who handed the letter to him, and while the postmaster experienced the content of the man who has performed a good deed looking for his office. तो क्या करता है जो लिंचो रहता है वो मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठता है और पोस्ट ऑफिस जाता है ताकि वो पोस्ट मास्टर पूछता है क्या कोई लेटर मेरे लिए है, क्योंकि वो रिप्लाई का वेट करता है. वो सोचता है कि भगवान मुझे चिट्ठी लिखे. तो पोस्ट मास्टर अपने हाथ से उसको एक एनवलप देते हैं. और
लिंचो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि मेरा जवाब वहां से आया, एंड इज सीइंग द मनी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंगर। वो लिफाफा जब खोलता है उसके अंदर पैसा रहता है, वो बड़ा सरप्राइज लगा, हाँ मुझे पैसा मिला, लेकिन उसके बाद वो गुस्सा हो जाता है, ही बिकेम एंगर। क्यों गुस्सा होता है? बिकॉज उसने जो डिमांड किया होता है 100 पीसों के लिए और उसको मिलता है 60 पैसों। ही काउंटेड द मनी, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड कुड ही हैव डिनाइड रिजन व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसको विश्वास है कि भगवान मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, मैंने जितना मांगा उतना ही दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलती हुआ है। Immediately Ninja went up to the window to ask the paper earning, और तुरंत वो विंडो पर जाके पोस्ट ऑफिस से पेपर इंक मांगता। On the public writing table, he started to write with a much wrinkle of his brow, caused by the effort he had to make the experience his idea. When he finished, he went to the window to buy the style in which he linked and then affix it. वो क्या करता है? उसका जवाब लिखता है, कहता है कि the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postman went and opened. He said, God, of the money that I asked of the 70 paise reach me. Send me the rest since I need it very much. But do not send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. तो चिट्ठी दोबारा जो चिट्ठी लिखता है भगवान को, उसमें वो लिखता है कि आप मुझे और जो जो पैसा आपने भेजा 70 पेज, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे 30 पेज और भेज दीजिए, लेकिन ये जो पैसा आप भेजेंगे मुझे मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो सही नहीं है, वो लोग पैसा चुरा लेंगे। Sheetal, you understood? Yes. Sita, I hope you understood the lesson. I will summarize the lesson in a very small thing now. इस लेसन में लेटर टू गॉड में जो फार्मर रहता है लिंचो, वो अपने खेत के पास बैठा रहता है कृष्ण पर पहाड़ के ऊपर, और दूर से वो विंड दिखता है, तूफान आते हुए, उसको लगता है कि अच्छा खासा बरसात होगा और मेरा खेत लहराने लगेगा। ये अचानक बहुत जोरदार तूफान आता है, पोटे पोटे ओले और पत्थर पड़ने लगते हैं, जिससे उसकी फसल खराब जाता है और बहुत दुखी होता है, और रात भर वो सोचता है, फिर वो भगवान से वो उम्मीद करता है कि वो भगवान उसको कुछ मदद करेंगे। तो एक चिट्ठी लिखता है गॉड को, चिट्ठी में वो 100 पीसों मांगता है उससे कि मुझे हेल्प करेंगे तो मैं अगला जो खेती फिर दोबारा खेती करूंगा ताकि मेरा परिवार आगे जीवनी चल सके। लेकिन वो पोस्ट ऑफिस में जब जाकर लेटर पोस्ट करता है तो पोस्ट मास्टर को लेटर मिलता है, पोस्ट मास्टर लोग बड़े हंसते हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर पोस्ट मास्टर क्या करता है, वो अपना हाफ सैलरी और कुछ लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसको लिफाफे में रख देता है, और सुबह जैसे वो आता है पोस्ट ऑफिस में और उसको लिफाफा हैंड ओवर करता है। जब वो लिफाफा हैंड ओवर करता है तो बड़ा खुश होता है कि भगवान ने मुझे भेजा है। जब वो खोलता है उसमें दिखता है पैसा तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जब उसको काउंट करता है उसमें खाली 70 पीसों रहता है तो वो बड़ा नाराज होता है कि भगवान ऐसी गलती तो कर नहीं सकता, ये कहीं ना कहीं बीच में कोई गलती हुई होगी। फिर दोबारा वो लेटर लिखता है कि भगवान से मदद के लिए कि मुझे बाकी पैसा भेज दीजिए, लेकिन बाय पोस्ट ऑफिस मत भेजिएगा कि पोस्ट ऑफिस के लोग रुक है, वो लोग सही आदमी नहीं है, पैसा निकाल लेंगे। ये पूरा लेसन का समरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड नाउ यू हैव टू राइट on this lesson note on it, and I will send you the question answer also. I hope Sheetal you understood this lesson. Come on, reply. Very good. Now, will you tell me who are the character in this? Write it and send it to me now on the live chat.
Come on, Cyril. What are the character in this lesson? You see, the first character is Lincho, then second character is the postmaster and the post office employee, right? Anything you want to ask? Okay. I will send you the question answer on the WhatsApp, and I hope you will write in a fresh new notebook everything. Okay. Bye. ठीक था